हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए और एक इम्पॉर्टेंट डिक्टेशन लेकर आया हूँ। ये डिक्टेशन पटना हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज की डिक्टेशन हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर पर भी अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो इस डिक्टेशन को स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेनो सॉफ्टवेयर पर और भी बैचेस एंड डिक्टेशंस अवेलेबल है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, एसएससी, एम्स, मिसलेनियस और भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है। आप लोग डेमो बैचेस से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़ में आप लोगों को एक महीने के लिए फुल सब्सक्रिप्शन मिलेगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, वहाँ न्यू डिक्टेशंस, पीडीएफ्स एंड अपडेट्स मिलेगी। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिक्टेशन सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीड को बढ़ाइए। शुरू करते हैं आज के लिए पटना हाई कोर्ट के लिए ये डिक्टेशन। Unlike natural calamities that are beyond human control, avoidable disasters resulting from human error or negligence prove more tragic and completely imbalance the intergenerational equity and cause irretrievable damage to the health and environment for generations to come. Such tragedy may occur from pure negligence, contributory negligence, or even failure to take necessary precautions in carrying on certain industrial activities. More often than not, the affected parties have to face avoidable damage and adversity that results from such disasters. The magnitude and extent of adverse impact on the financial soundness, social health, and upbringing of younger generation may have been beyond human expectations. In such situations, and where the laws are silent or are inadequate, the courts have unexpectedly stepped in to bridge the gaps to provide for appropriate directions and guidelines to ensure that fundamentals of Article 21 of the Constitution of India are not violated. The Bhopal gas tragedy is a glaring example of such imbalances and adverse impacts whereby courts intervention, poor and destitute have been provided relief and rehabilitation. The Bhopal gas leak disaster occurred on the intervening night of the 2nd 3rd of December 1984. Data reflecting the exact number of affected persons was not available initially. Earlier, it was felt that only a small number of persons were adversely affected in terms of health or otherwise by the leakage of toxic gases from the Union Carbide unit at Bhopal. However, the Scientific Commission for Continuing Studies on Effects of Bhopal gas leakage on life systems released a report titled The Bhopal Gas Disaster Effects on Life Systems in July 1987, which suggested otherwise. This report stated that for the estimated
population of 2 lakh exposed to the toxic gases in the severely and moderately affected areas of Bhopal, and the variety of long-term problems anticipated in the crisis period. The number of exposures covered so far by the Indian Council of Medical Research through the